Welcome back students. In today's video we will be discussing about the benefits of drinking clean water. साफ पानी पीने के क्या फ़वाइद हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे. But before we start, you should know that there is a fact that 60% of your body consists of water. That means it is important कि हमारी water intake जो है वो regular हो. Alright? It is said that a person should take 9 to 12 glasses of water in a day. ठीक है, to keep themselves hydrated. It has number of health benefits for us. For example, वाटर जो है वो हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है. ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेट करने में और ऑक्सीजन सर्कुलेट करने में इट हेल्प्स अस. Besides that, it also improves our brain performance. हमारी brain की जो activity है, thinking and all the other things are actually more efficient if we are taking good amount of water and we are keeping ourselves hydrated. इसी तरह हमारी बाकी जो body है, जैसे कि हमारे कुछ tissues in our eyes, in our nose and in our mouth, they should be moistened, and that happens when you are hydrated. That is, you are drinking clean water daily. All right. However, consuming water should when you're consuming water, you should keep this in your mind that it should be clean. But if you are consuming polluted water, it may lead to diseases like typhoid, hepatitis, जो हम already discuss कर चुके हैं कि contagious diseases जो हैं वो mostly किन reasons के through होती हैं, फैलती हैं या transfer होती हैं. It's actually when you drink the polluted water. Alright, that we have already discussed. Alright, so we should make sure in order to lead our healthy life, we should be drinking the clean water. Okay, so we are going to discuss some of the causes or the factors of the water pollution. Alright, कि हमारा पानी जो है वो ज़्यादातर क्यों पोल्यूट होता है. एक तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ऑयल पोल्यूशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, water waste and radioactive substances and thermal pollution. Alright, all of these are some of the causes and the factors that pollute our water. ठीक है, air consists of various gases, dirt and particles. All these particles mix in the water. ये हमारे सारे particles जो हैं ये हमारे पानी में mix हो जाते हैं. Such rain water reaches ponds, canal, river and lake and pollutes them. ठीक है, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फैक्ट्रीज के वेस्ट का एग्जांपल लेती हूँ तो उनके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, दे डंप इट इन द पॉन्ड और इन द लेक और इन द ओशन. राइट, तो इससे हमारी मेरीन लाइफ भी अफेक्ट होती है और इससे हमें क्या नाम है, हम जो पानी पीते हैं वो भी पोल्यूट होता है. ऑलराइट, इसी तरह अगर हम एग्जांपल लेंगे फैक्ट्रीज वगैरह की, ऑलराइट, इनके जो रेडियोएक्टिव वेस्ट होते हैं दैट गेट्स इनटू द the droplets of rain, और ये जब rain होती है तो it is harmful for our environment and it cause a lot of other problems as well. ठीक है, the poisonous water coming from homes और जो हमारे garbage और हमारे fertilizers में से आता है, that is also polluted. ठीक है, so if we are drinking water we should make sure that it's clean. In order to make our water clean, there are some ways that we should follow, या हमें उस waste और इस process से गुजरे हुए पानी को ही पीना चाहिए. So there are two ways you can clean your water, that is boiling and filtration. Alright, so how can we do the boiling thing? It can be done in our home. ठीक है, you have to continue heating water in a pot till it reaches the boiling point. ठीक है, आपने एक pot लेना है, उसके अंदर पानी डालना है and you keep on boiling it, और उसमें bubbles जब form होने लग जाएंगे तो आपने उसको क्या करना है, बॉईल होने देना है almost 5 to 10 minutes के लिए, and that is when the boiling point reaches. और उसके बाद क्या होगा कि जितने भी germs उस पानी के अंदर होंगे it will be killed off and then you can cool down the water and you can drink it later. alright, इसी तरह हम अगर filtration का करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि when you are making a tea,
you are actually using a filter to मेक श्योर कि वो जो टी के पार्टिकल्स हैं या लीव्स हैं इट रिमेन्स इन द फिल्टर, और सिर्फ टी की जो ड्रिंक है वो आप पी सकें, राइट। इसी तरह आप एक मेथड है जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप पानी को भी फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाटर इज़ ऑल्सो पास थ्रू द फिल्टर फॉर क्लीनिंग इन अ सिमिलर वे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आप फिल्टर के थ्रू पानी को गुजारते हैं। And the particles present in the water cannot pass through the pores of the filter and we get clean water, ठीक है। तो वो एक फिल्टर टाइप होता है, उसके अंदर से हम उसको गुजारते हैं, और वो जो है क्या होता है, पानी को जब गुजारते हैं तो जो पानी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं इट गेट्स स्टक इन दैट फिल्टर, और जो है आपके पास जो नीचे पानी आता है इन द जार और वट एवर थिंग यू आर पुटिंग डाउन under the filter, so that is actually a clean water, right? So this is one of the way for uh, cleaning your water, और इसको हम क्या कहते हैं, filtration कहते हैं। I hope you guys understood how we can clean our water. See you guys in the next video.